Okay, so last lecture में हमने देखा था this agents graph representation. So you know very well now graph representation is indicate G of V and E. G is nothing but graph like this. This is a graph you can say. V is a vertices and edges, right? So हमने edges means what, vertices, types of edges ये सब last lecture में we have study about this all, right? So in this lecture we're going to let me this is the edges matrix, means graph representations having two types, that is a adjacency matrix and adjacency list. So हम लोगों ने adjacency matrix देखा था, right? This is a, so यहाँ पे just see here this 1 to 5 and 1 to 5 because 5 vertices we can see. Now graph representation is indicate G of V and E. G is nothing but graph like this. This is a graph you can say. V is a vertices and edges, right? So हमने edges means what, vertices, types of edges ये सब last lecture में we have study about this all, right? So in this lecture we're going to let me this is the edges matrix, means graph representations having two types, that is a adjacency matrix and adjacency list. So हम लोगों ने adjacency matrix देखा था, right? This is a, so यहाँ पे just see here this 1 to 5 and 1 to 5 because 5 vertices we can see here, right? 1 2 3 4 5, right? So 1 2 3 4 5 and 1 2 3 4 5. So यहाँ पे कौन सा एरो कहाँ पे मीट कर रहा है, दिस इज उससे हम लोगों ने ये मैट्रिक्स निकाला था, राइट? जैसे कि सी हियर 1 and 1, so 0. Why? Because कोई भी एरो 1 को मीट नहीं कर रहा है. Then we have seen that 2 and 1, so here also 2 ये 1 को मीट नहीं कर रहा है, मीन्स पॉइंट कनेक्ट नहीं हो रहा है, एरो is not here, this arrow. So here also 0. So you can see in this matrix no one arrow is means in 3 and 1 also not meet to the particular one. Okay, 4 and 1 also not, 5 and 1, so here all 0. So हमने next row देखी थी, that is the 1 and 2. So you can see now we are going to see this matrix, right? 2. So yeah, of course 1 ये 2 से meet कर रहा है, so यहाँ पे हमने 1 लिखा. Okay, but 2 और 2 से meet कर रहा है, no, तो self loop भी नहीं है, so यहाँ पे 0 आया था, right? देन सी 3 and 3 से मीट कर रहा है, मीन सेल्फ लूप ऐसा है, नो, सो यहाँ पे हमने 0 में 3 and 3 3 and where I am 3 and 2, sorry, here you can see we are going to see this row, right? This column, not row, this column. So 3 and 2 ये मीट कर रहा है, right? You can see this दो arrow, right? So यहाँ पे हमने 1 लिखा. Then 4 and 3 मीट कर रहा है एक दूसरे से, no, means 4 ये 3 की यहाँ पे in degree you can say in okay in out degree या in a in जैसे कि yesterday हम लोगों ने देखा ही था what is the in degree, out degree, right? So outgoing edges, incoming edges. So incoming edges जहां भी आएंगी particular point numbers पे, that is we have to mention in one. And अगर 1 2 जो भी होगा, okay, incoming, this is the incoming and this is the outgoing, right? हमने देखा था. So particular column में अगर incoming जितनी भी edges है particular points numbers को लेके, तो वहां पे वो हमें मेंशन करना है. अभी जैसे कि यहाँ पे यू कैन सी सपोज एग्जांपल 5 and 3 टेक, अदरवाइज 3 4, ओके, या इफ यू वांट टू सी द 3. अब 1 ये इनकमिंग आउटगोइंग टू 3, इज इट? या दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे आउटगोइंग एजेस देखना है पर्टिकुलर पॉइंट्स लेके. अब 4 आउटगोइंग है क्या 3 से? चेक इट, नो. So यहाँ पे 4 and 3 of course 0. अब check now 4 and this 4 and this 4 column. Okay, already we have seen this particularly in detail. So यहाँ पे जैसे हम overview देख रहे हैं इसका. Okay, so check it now 4 and 1 ये है income. No, you will be confused कि यहाँ पे मैम arrow है, so we have to write 1 here in 4 column, right? या वाई वी आर राइट, बिकॉज ये इनकमिंग या आउटगोइंग हो रहा है, सो हम यहाँ पे 1 लिखे, राइट? अब चेक 2 में 4 का कोई कनेक्शन है या आउटगोइंग है, नो, सो यहाँ पे इसलिए 0 आया. देन चेक इट 3 का कोई कनेक्शन है, नो, सो यहाँ पे अगेन 0. 4 कनेक्शन, सी हियर सेल्फ लूप है खुद से, ओके, सो इसलिए यहाँ पे हमने 1 लिखा. 5 का कोई कनेक्शन है, नो, इसलिए हमने 0 लिखा. और चेक इट ऑल 5 से कोई भी पॉइंट मिड इनकमिंग नहीं हो रहा है. 5 आउटगोइंग टू 2, इसलिए यहाँ पे हमने 5 और 2 की जगह 1 लिखा, लेकिन इनकमिंग नहीं है, राइट?
सो जो भी पॉइंट में पर्टिकुलर हमें जो भी कॉलम देखना है उसका हमें इनकमिंग देखना है, अगर जो इनकमिंग से मीट कर रहा है कोई पॉइंट, सो वी हैव टू मेंशन हियर वन. ओके, सो दिस इज अबाउट योर एजेंसी मैट्रिक्स. सो नाउ वी गोइंग टू सी व्हाट एजेंसी लिस्ट. ओके, सो ये हमने एजेंसी मैट्रिक्स देखा था, अब हम लोग देखने वाले एजेंसी लिस्ट. So for agency list, we have to draw first diagram with the help of, yeah, you can say the graph. With the help of this graph, we have to make a column and then we have to make the agency list. Okay, so let's draw first the diagram, then you will get better. Okay, let me draw first, then we will discuss. Okay. Help of this graph, we will discuss about agency list. Okay, let's complete this first. We have to give connection here to make this graph. Okay, so this is the agency list. Okay, हमने graph representation में agency matrix देखा. Means with the help of graph we draw the matrix. Okay, so we have drawn this matrix in my previous lecture also we have say study. So graph representation में exam में आता है explain graph representation. So first of all you have to define what is graph and graph में क्या contain होते हैं, like vertices, edges, the definition of this both, right? We have already clear cut about this definition. Then after this agency matrix and agency list, ये दोनों आपको mention करना होगा. Okay, so ये graph है आपका एक agency list का. Agency list will link list. Okay, agency list will be link list. You can say here. Then fine. Okay, fine. And how many link lists will be there for each vertex? One link list will be maintained like this. In this case, we are having how many vertices? Okay, so you can, in this case, in this diagram, 5 vertices are there, right? We are having how many vertices? That is 5. Number of vertices are here, right? So we have to first draw the diagram, sorry, table here. Let's take the table again. Okay, then we will get, just 1 minute. For table, we will take this. Okay, we require 5 vertices here. So here 5 vertices there already. Okay, so here we will put the 1 2 3 4.
1 2 3 4 5, right? 5 vertices there. So let's give the name here. Okay, 1 2 3 2. Okay, then 3 4 5. Okay, so this is 1 2 3 4 5. Okay, so for each one linked list will be, this is a like linked list. Okay, vertex ये diagram linked list में, इस डायग्राम को हमें इस फॉर्म में फर्स्ट ऑफ ऑल लिंक लिस्ट में हमें इसको कन्वर्ट करना है. ओके, एजेंसी लिस्ट विल बी लिंक लिस्ट. फाइन, एंड हाउ मेनी लिंक लिस्ट विल बी देयर. अगर यहाँ पे 6 7 होता तो हम लोग 7 रो कॉलम बनाते, बट वी हैविंग 5. ओके, तो हमने यहाँ पे 5 कॉलम बनाए. ओके, so will be there for each vertices one linked list will be maintained like this. In this case we are having how many vertices? Total 5. Here also 5, so here हमने 5 बनाया. Number of vertices are there. So for each one linked list will be there. That linked list contain agency node to particular node. Oh, find like this. Okay, agency node to particular node. Suppose first one, what, how many agency node देयर सी. अभी फर्स्ट में कितने एजेंसी नोड है वो हम लोगों को मेंटेन करना है. ओके, सो इफ यू वांट टू यू कैन टेक दिस डायग्राम ओनली, अदरवाइज फर्स्ट draw like this, then you can copy here. Okay, let me move this. So you will be get better. ओके, आफ्टर दिस हम लोगों ने ये डायग्राम बनाया इस ग्राफ के ऊपर से. ओके, देन ओके, सो अभी हम लोगों को क्या करना है? Suppose first one, how many agency node, so we have to see agency node there. One so one में कितने agency node से we have to see 1 and 2. okay, अब one में कितने node से you can see like this and this line. okay, so हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? Just 1 minute. Okay, 1, right? So that is a 2, you can see here, right? And देखो 1 में 2 और 4, right? 4. So make it column. So I make it table here, 2 and 4, right? 2 and 4. तो ये एजेंसी लिस्ट में हम लोगों को पर्टिकुलर नोड्स में कितने एजेस है या what I say, we have to count and we have to write this like this. Okay, okay, wait, just 1 minute. Okay, okay, so now check in second so for second, how many vertices, how many agency nodes there. Okay, second for second vertices, how many seconds here? You can see here, see 3 से कनेक्ट है, 1 से कनेक्ट से 4 से कनेक्ट है, राइट? सो ये सेकेंड वाला नोड 3 एजेस से कनेक्ट है. सो फिर हम लोग कैसे लिखेंगे यहाँ पे? सपोज राइट 3, राइट? सॉरी, फर्स्ट राइट 1, मतलब you will get better here. okay, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं सी. 1 से कनेक्ट है, राइट? यू कैन सी हियर. देन 3 से कनेक्ट है एंड 4 से कनेक्ट है, राइट? सो जस्ट make the connection. Okay, so ये किस किस से कनेक्ट से लाइक दिस हम लोगों को इस डायग्राम के ऊपर से हमें लिखना है. ओके,
Okay, but this also connection there. Okay. Mm. ओके, मतलब ये कनेक्ट है। ओके, यहाँ से कनेक्शन देना है आपको। देन चेक, मूव टू द नेक्स्ट। अब 3 चेक करो, 3 कितने नोट से कनेक्टेड। सी 2 5 4। सब लोग कैसे लिखेंगे 3 वाले। ओके, सी 3 2 से कनेक्ट है, राइट। 4 से कनेक्ट है एंड 5 से कनेक्ट है, राइट। So again give here like this also you can do. Give, okay. Okay, 2 3 से then check the 4 किससे connected, right? 1 से, of course 2 3 5 all से connected, right? 4. So right here, right 1, then 2, then 3 4 5, right? Or 1 2 3 4 से कैसे होगा? Itself, no, it's not having self, right? 4. So then again give the connection here, right? And you can give this like this, make the column like this. Okay, then check if the 5 किससे connected 5. Check the 5 again. Okay, so 5 connects से only see 3 or 5, 3 and 4 से 2, right? 3 and 4. So ये 5 connected to 3 and 4. ओके, सो ये है एजेंसी लिस्ट। मतलब आपको एक ग्राफ में पर्टिकुलर पहले लिंक लिस्ट बनानी है। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा एजेंसी लिस्ट एंड एजेंसी मैट्रिक्स। जस्ट आपका एजेंसी मैट्रिक्स में हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे हमने आंसरिंग किया था, इसलिए मैंने अगेन आपको वो एक्सप्लेन किया, क्योंकि एक्सप्लेन द ग्राफ रिप्रेजेंटेशन अगर एग्जाम में आता है तो यू हैव टू से फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ ग्राफ, देन यू हैव टू से द वर्टाइसेस, मीनिंग ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस। उसके बाद आपको ये पर्टिकुलर ग्राफ बनाना होगा। ओके, फिर उस ग्राफ में आपको मैट्रिक्स फॉर्म में, इन एजेंसी मैट्रिक्स फॉर्म में इसको शो करना होगा एंड एजेंसी लिंक लिस्ट फॉर्म में इसको आपको शो करना होगा। सो दिस इज अबाउट योर ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ पर। ओके, सो आफ्टर दिस लेट्स चेक द व्हाट this one. Okay, so after this we will move from here. Graph we have seen, now graph travels. So graph travels here we will see. Okay, just 1 minute. Okay, okay, now next point is the graph travels. Graph travels कि ग्राफ कैसे ट्रेवल्स होते हैं, राइट? ट्रेवर्सल also you can say. Okay, so ग्राफ ट्रेवर्सल में क्या है? ग्राफ ट्रेवर्सल is a technique used for searching vertex in a graph. Graph traversal means visiting every vertex and edge exactly one in well defined order. मतलब हर एक vertex और edges ये well defined order में mixed होता है. While using graph algorithm, you must be sure that each vertex of the graph is visited exactly one. Okay, so there are two graph travels technique, and there are as follow. Graph travels axis में having two types, that is DFS and what DFS and BFS. Okay, so यहाँ पे two techniques है, like DFS and BFS. Okay,
So ये दो टेक्निक है, DFS एंड BFS. So let's check. So DFS is nothing but depth first search. Okay, that's nothing but depth for search. For search. Okay, and sorry, and BFS is nothing but breadth for search. For search. Okay, this is ये दो टेक्निक है इसमें. Okay. 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 So here DFS first depth first search algorithm travels a graph in a depth motion and use a stack to remember to get next vertex to to the stacks. Sorry, when a dead and occur in any iteration. So you need undiscovered state, the initial state of vertex. So यहाँ पे undiscovered state, discovered state, process state, ये तीन state follow play role करती है. Okay. So यहाँ पे कैसे है? Undiscovered state means what? The initial state of vertex. Then discover state is the vertex is uncounted but not yet proceed, and process state is the vertex has been visited. So just 1 minute. Okay, so here the step in steps for DFS, first step is that initially all the vertices of graph are said to be undiscovered. Okay, undiscovered means the initial state of vertex. So initial all the vertex of graph is said to be undiscovered. Then change. Second step is that in the DFS, change the state of starting vertex of a graph to discover and put it in the stack. Then third step, repeat step 4 to 5 while stack is not empty. Remove vertex say v which is the top of the stack and change it to the state process. Repeat for all undiscovered vertices. U of vertex V is set to the state discover and push to the stack. So stack ये हमने data structure में भी देखा, right? What is stack? And in previous lecture में भी हम लोगों ने एक infix and postfix का example से stack कैसे full करना है या कैसे empty करना है we have studied. Empty stack को कैसे हम लोगों ने full किया था, particular with the help of example, expression and with the help of operator and operands, right? अगर आपको याद होगा तो मे बी अगर आपने लेक्चर अटेंड किया हो तो. सो यहाँ पे ट्रेवल्सर है, यू कैन सी दिस इज अ ट्रेवल्सर एंड ये एक स्टैक है. ओके, so initially the stack is empty, you can say, right? Initially vertex of graph is undiscovered, right? कुछ भी नहीं है यहाँ पे. Then second you can see stack top is a S, right? यहाँ इस ग्राफ से हमें उस stack को fulfill करनी है, right? So first of all as stack top S, yeah. So marks as visited and put it in onto the stack, right? Explore any unvisited adjacent nodes from S. We have 3 nodes and we can pick any of them for this example. We shall take the node as alphabetically ordered. Okay. Then after the put we having three. After putting we having the 3 nodes, but we will put as the alphabetically order here, right? So then we will move to check. We having 3 now this. Okay, so we will move first here with the help of alphabetically order. So here see, after this marks A, see here after S putting marks A, we getting here A. Mark A visited and put it onto the stack in explorer any unvisited adjacent node A. Both D are adjacent to A. We are connected for unvisited node. So we have हमें इस stack को fulfill करनी है. Okay, after this हमने A को put किया, right? Then you can see here after A we go to the D, right? फिर हमने D को put यहाँ पे put किया इसमें. So visit D and mark it visited. अगर उसके बाद हम लोग यहाँ पे करना put करना means इस mark it visited है, okay? And put onto the stack.
Here we have B and C node, which are adjacent to the D, and both are unvisited. However, we shall again choose in alphabetical order. Then here again we go here. We choose B. We choose B, mark it visited, and put onto the stack. Okay. So see जो जहां जहां से हम लोग पुट कर रहे हैं वहां से हम वो इसको हमने डी का हमने okay, see here we have okay, we choose B mark and is visited and put onto the stack where B does not have any unvisited adjacent nodes, so we pop B from the stack, right? Then we check the stack pop for return to the previous node and check if it has any unvisited node. Here we find D to the onto the top of the stack. Then only unvisited last one, only unvisited adjacent node is from D is C now. So visit the C marks as visited and put it onto the stack. मतलब हर एक पॉइंट को हम लोगों को visited marks देके stack में put करना in short, right? First of all वो stack empty था, right? In this then हमने first of all root को put किया, then हमने in order to A, and then after A we put D, right? Then C, A, then D, then B and C. Finally हम लोगों को stack को put करना था, right? So this is about your DFC. Okay, so DFC algorithm initially all vertices mark on. हे पॉइंट समजले आपण ज्याचा बघितलोय. येस, हा पॉइंट समजले तुम्हाला स्टॅक पैकी कसं पुट करतात. भूषण, फैजान, प्रसाद, ऋतुजा. येस बोला. यस मैम. समजलं ना हा पॉइंट. यस मैम, बट वो Okay. डायग्राम वो दिख नहीं रही है ना पूरी है इसकी. मतलब क्या ये डायग्राम, मतलब ये एक मिनट, ये डायग्राम तो है क्या, मतलब बल ठीक से दिख रही है क्या? मैम अभी दिख रही है, अभी जूम किया तो दिख रही है. दिख रही है ना, तो रुक मैं फिर से यहाँ पे लगाती हूँ, यहाँ से फिर देख. ठीक है. With the help of alphabetically order. So here see, after these marks A, see here, after S putting marks A, we getting here A, mark A visited and put it onto the stack. In Explorer any unvisited adjacent node A, both D are adjacent to A, we are connected for unvisited node. So we have हमें इस stack को fulfill करनी है. Okay, after this हमने A को put किया, right? Then you can see here after A we go to the D, right? फिर हमने D को put यहाँ पे put किया इसमें. So visit D and mark it visited. अगर उसके बाद हम लोग यहाँ पे करना put करना means इस mark it visited है, okay? And put onto the stack. Here we have B and C node, which are adjacent to the D, and both are unvisited. However, we shall again choose in alphabetical order. Then here again we go here. We choose B. We choose B, mark it visited and put onto the stack. Okay, so see जो जहां जहां से हम लोग put कर रहे हैं वहां से हम वो इसको हमने D का हमने okay, see here we have okay, we choose B mark and is visited and put onto the stack where B does not have any unvisited adjacent nodes, so we pop B from the stack, right? Then we check the stack pop for return to the previous node and check if it has any unvisited node. Here we find D to the onto the top of the stack. Then only unvisited last one, only unvisited adjacent node is from D is C now. So visit the C marks as visited and put it onto the stack. मतलब हर एक पॉइंट को हम लोगों को visited marks देके stack में put करना in short, right? First of all वो stack empty था, right? In this then हमने first of all root को put किया, then हमने in order to A, and then after A we put D, right? Then C, A, then D, then B and C. Finally हम लोगों को stack को put करना था, right? So this is about your DFC. Okay, so DFC algorithm initially all vertices mark unvisited fall. The DFC algorithm start a vertex U in a graph.
Thus, starting of vertex, you consider the edges from U. If the edges leads to already visit vertex, okay, if edge leads to unit vertex, then go to the vertex and start processing from that. So this is about the UI DFC. Okay, now in next lecture we will see about BFS. Okay, so in BFS also having one example. Right, BFC here with first search. BFS is traveling algorithm where you should start traversing from सिलेक्ट नोड. ओके, हमें सिलेक्ट नोड से ट्रैवलिंग करनी होगी, राइट. देन फिर उसके बाद हमें मतलब आई एम जस्ट गिविंग जस्ट शॉर्ट इंट्रो ऑफ बीएससी. ओके, सो एक्सप्लोर इन ऑर्डर. So the PFC suggests you are required to traverse the graph braid white follows. First move horizontally and visit all the nodes of the current layer and move to the next layer. So ये कुछ BFC के example होगा, उसका steps होंगे. We will see in my next lecture. Okay. Then we will see the topological short. Okay, in next lecture we will going to see BFS and topological short part algorithm. और एक दो प्रैक्टिकल हम लोग देखेंगे. हमने वन प्रैक्टिकल ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम लोग, राइट. वन प्रैक्टिकल वी हैव ऑलरेडी मतलब completed. We have done this one practical. So if your exam will be offline, then practical भी होने चाहिए सारे, राइट. सो फर्स्ट प्रैक्टिकल कवर हुआ है, हाँ, और सेकंड प्रैक्टिकल इस जिस नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे और विद द सम थ्योरी पॉइंट्स. ओके, so let's stop here now. Okay, thank you. Okay, you can leave now.